Hello everyone and welcome to Career Launcher. This is Salik Ahmed and in today's class we are going to discuss about SIR, that is Special Intensive Revision, that is currently happening in the state of Bihar. So initially I thought कि maybe शायद इतना important नहीं होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा news articles आई तो मैंने सोचा कि let's have a discussion because we have seen a lot of editorials and newspapers articles regarding SIR. In fact, the matter was there even in the Supreme Court regarding which documents to be required, etc., and many other things associated with that. Regarding SIR and whether Aadhaar should be acceptable in Aadhaar in SIR or not. Okay, so in today's class we are going to discuss about that. We will discuss the powers of Election Commission and what exactly it is. Has it been done in the past? If yes, when? अगर पास्ट में SIR हुआ है तो अगर हुआ है तो कब हुआ है, ठीक है, ये सब चीज हम लोग एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से विल बी डिस्कसिंग. सो एम आई ऑडिबल, विजिबल, इज एवरीथिंग फाइन? सब क्लियर है? Shall we begin? The slide is visible? Yes? Please write yes. Yes, good afternoon Anusha, Siddhi, Harsh, good afternoon guys. आवाज आ रही है? Slide is visible, everything is fine? Okay, so let us begin. ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस SIR coming in the newspaper again and again. Okay, now so we will discuss it with the help of the PIB reports, है ना? So this is actually from the Election Commission, ECI, that is Election Commission of India, to begin SIR, Special Intensive Revision of Electoral Rolls in Bihar. Okay. Why? Because in Bihar we are going to have election most likely in October, or you can say November, most likely in November this year 2025 we will be having legislative assembly elections. ठीक है, इस साल नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, मतलब है ना, MLAs जिसमें इलेक्ट होते हैं, MLAs and chief ministers etc. So house to house verification to be done to ensure that all eligible citizens, political parties to be encouraged एक्टिवली इन द रिवीजन प्रोसेस. ठीक है, तो पहले ये समझना है कि इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्टोरल रोल. तो अगर आपने देखा होगा, ये है आपके सामने. आई एम श्योर हो सकता है शायद मे बी यू माइट हैव नॉट वोटेड, बट योर पेरेंट्स एंड योर you must have seen your elders in your family going to vote, so they first check their names and photos here, है ना, in the electoral roll. Okay, I'm sure you must be aware. So if you want to vote, first of all, of course, you have to be a citizen of India, 18 plus. Then you should get a voter ID card and apply that. Yes, I mean, these are the process through which your name is registered in a particular constituency and in a particular booth, where your name and photo along with your parents' name, age, gender, etc. would be there in the electoral roll. इसको कहते हैं electoral roll, right? Means whenever there is a name in your electoral roll, of course, then only you can go and vote. ठीक है, तो आपका नाम होना चाहिए इसमें, पर्ची में, इलेक्टोरल रोल में, और इसमें आप नाम खोजते हो अपना, अपने फोटो ढूंढते हो नाम के साथ और पेरेंट्स नेम, और फिर इसमें रहता है, तब आप वोट करते हो, राइट? नाउ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या मतलब हुआ? अच्छे बेहतरीन तरीके से इसको पूरा रिवाइज किया जा रहा है, ये इलेक्टोरल रोल, कि फिर से एक बार उसको चेक किया जाएगा. A lot of names will be deleted and a lot of names would be added. बहुत सारे नाम को हटाया जाएगा और बहुत सारे नाम को ऐड किया जाएगा. ओके, बट द थिंग इज व्हाई, है ना? सो विल डिस्कस दिस, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसका बारे में बात है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये कब था? 24 जून 2025 को ये PIB में प्रिंट हुआ था, राइट? सो इट सेज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टुडे इशूड एन इंस्ट्रक्शन फॉर होल्डिंग SIR. अब डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 24 जून 2025, राइट, है ना? In the state of Bihar, as per the guideline schedule specified by the Election Commission, the objective is to ensure that all eligible citizens are included in electoral roll, so as to enable them to exercise their franchise. No ineligible voter is included in the electoral roll. पहली चीज ये है कि बहुत सारे लोगों का इसमें नाम नहीं होगा, उसको ऐड किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, a lot of people in the recent years might have become 18 plus. ठीक है, बहुत सारे लोग 18 साल के हुए होंगे, 18 plus, और उनका नाम नहीं होगा. Okay, now they should be added in this electoral roll list, right?
So for that, of course, a sort of a revision is being done. Second thing is ineligible लोगों को का नाम नहीं होना चाहिए. Ineligible means, for example, let's say earlier the person was a citizen of India. Now that person, let's say, went to the, I'm just giving example, he went to the US, he got the citizenship. Now please tell me, is there any scope of dual citizenship in India? क्या कोई ऐसी जगह है इंडिया में किसी और कंट्री के साथ जहां पर डुअल सिटीजनशिप हो सकती है इंडिया की? इज इट पॉसिबल, यस और नो? नो. ठीक है, नो, नॉट एट ऑल. एंड किसी भी कंट्री के साथ डुअल सिटीजनशिप का कोई भी स्कोप नहीं, राइट? सो बेसिकली इफ यू एक्वायर एनी अदर कंट्री सिटीजनशिप, योर ओन सिटीजनशिप विल बी ऑटोमेटिकली लॉस्ट. ठीक है, अगर आपने किसी और कंट्री की नागरिकता जैसे ही ली, ऑटोमेटिकली आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी. लेकिन क्या होता है, इलेक्टोरल रोल में नाम रह जाता है, राइट? So when revision is being done, so you have to remove those ineligible voters, those who are not the citizen or who have acquired the citizenship or who have got the document with forged identity, etc. तो उनको हटाना भी है, right? That is the idea behind this, and to introduce a complete transparency in the process of addition or deletion of electors. That is what Election Commission says. ठीक है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय इलेक्शन कमीशन. ठीक है, कि ट्रांसपेरेंसी रखनी है, यानी पारदर्शिता होनी चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए किस प्रोसेस से ऐड हो रहा है और किस प्रोसेस से डिलीट हो रहा है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज कि लास्ट एसआईआर अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लास्ट एसआईआर इन बिहार वाज डन इन व्हिच ईयर? एनीवन? अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, last special intensive revision in Bihar was done in which year? I've just shown you actually. Yes, Mahathir Subramaniam, you're right. 2003. So 2003 में से पहले हुआ था. Okay. Various देखिए आप लिखा हुआ भी था actually. Various reasons such as rapid urbanization, frequent migration, young citizens becoming eligible, non-reporting of deaths, and inclusion of names of foreign legal migrants have been necessitated this. तो इन लोगों ने खुद रीजन बता दिया. पहला की रैपिड अर्बनाइजेशन, मेनी पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. मान लीजिए कोई आदमी गांव में पहले रहता था, सो इफ ए पर्सन वाज लिविंग इन रूरल एरिया, ही यूज्ड टू वोट देयर. नाउ हु हैज शिफ्टेड टू अर्बन एरियाज एंड ही इज लिविंग देयर बिकॉज़ ही इज डूइंग जॉब. ओके, सो ही वांट्स टू बी रजिस्टर्ड हियर. तो जब इंटेंसिव रिवीजन में होगी, यहां से नाम हटा के यहां ऐड कर दिया जाएगा. योर नेम विल बी डिलीटेड फ्रॉम रूरल एरियाज एंड एडेड in that urban city area where you are living. Okay, so that is one thing. Frequent migration, yes, वही हो गया. Then young citizens becoming eligible voters, yes, many have become 18 plus, so they should be given the right to vote, so of course that their name should be added in electoral roll. Non-reporting of deaths, इसमें कि बहुत सारे लोग हो सकता है डेथ कर गए हो, उनका नाम हटाइए वहां से, right? That is what the idea is. And of course illegal immigrants or those who have left the citizenship or have gone to some other country, so those names should be removed, right? That is the idea behind it according to Election Commission of India. ठीक है, इस कारण से SIR किया जा रहा है ना. So error free electoral roll हो. And the booth level officers वही टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स आर देयर. जो एकदम बूथ पे ले, जिस बूथ पर आपको वोटिंग करना होता है, बूथ इज जनरली अ गवर्नमेंट स्कूल वेयर यू गो एंड वोट. So there are some government teachers that are being appointed as BLOs and you have to go and actually talk to them. ठीक है, कोई भी जब SIR के पूरे प्रोसेस में BLOs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. These are generally government teachers. ठीक है, so you have to go and submit your form and the documents. I'll discuss it. तो वह मैं डिस्कस कराऊंगा आज. ठीक है ना. So while conducting SIR, election commission will be scrupulously adhere to constitutional legal provisions. ठीक है, regarding eligibility etc. as mentioned in 326. What is mentioned in Article 326? Anyone? Of the Indian Constitution. SIR काफी न्यूज में था, इसलिए मैं इसको डिटेल में जा रहा हूं. ठीक है, प्लीज टेल मी व्हाट इज आर्टिकल 326. एनीवन? एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग अ वोटर इन इंडिया क्या हो सकता है? यू थिंक एंड प्लीज आंसर मी. सोच के बताइए कि इंडिया में क्या एलिजिबिलिटी होगी. व्हाट शुड बी योर एलिजिबिलिटी if you want to be a voter or an elector word लिखते हैं या voter in India. Rules to be followed. Rules ठीक, qualification of voters, yes. तो qualification क्या है? अगर what are the criterias
which is necessary for you to be a voter in India. बहुत simple criteria है. You have to be a citizen and 18 plus. Yes, very good. Chandrika, right? हाँ, 326 यही तो है. Adult suffrage. यही चाहिए. First thing is you have to be a citizen. Second, दूसरा है 18 plus होना चाहिए. Then only you are eligible. उसके बाद फिर आप अप्लाई करो for voter ID card and electoral roll. So first bare minimum thing is this, है ना, 326 adult suffrage. And similarly, अगर आप देखोगे, if you add 325, which actually talks about universal suffrage, irrespective of your religion, race, caste, gender, you are allowed to vote. Universal suffrage. ठीक है? So 325 and 326 read together will tell you the idea of universal adult franchise. तो ये तो adult franchise हो गया, है ना, 18 plus right to vote. So if you read article 325 and 326 together, it talks about UAF, है ना, universal adult franchise. Okay, this has to be very crystal clear. तो वही बता रहे. Now I have a question, and it's a very famous question that were asked in many exams, and that is which constitutional amendment reduced the minimum age to vote from dash years to 18 years. तो पहले आपको यहां भी भरना है और इसमें से आंसर करना है. So basically there are two questions in this. यहाँ पे लिखा है 18 years, but earlier it was not 18 years, it was something else. बताइए. Yes, Siddhi Vij, Chandralekha. 21 year, 61st. Yes, Siddhi Vij, perfect answer. So here the answer is 21 years, it was reduced to 18 years, and the answer is 61st amendment. Yes, Chandralekha Mahathi, you are right. ठीक है. So B is the right answer. तो ये आपको पता होना चाहिए. The next question is, yes, Nagalakshmi, you are also right. The next question is, right to vote is what? A fundamental right, a constitutional right, legal right, natural right. What should be the most perfect answer in case of India? It's a constitutional right. It is mentioned in the Constitution, 325 and 326. Just we have discussed. Rights which flows from the laws, like Mahatma Gandhi, Manrega, it's a legal right to work. So the right answer is B, constitutional right. Yes, Mahati Subramaniam, you're right. Okay, so B is the right answer to this question. Okay, we have discussed about 326. Yes, they were talking about it. Ki eligibility, like the how whether you will be a voter or not, and whether your name will come in the electoral roll or not, it will be decided by 326. Plus, we are talking about Section 16 of Representation of People's Act 1950. So there are two laws, Representation of People's Act 50 and 51. But here we are talking about Section 16 of Representation of People's Act 1950. Let's talk about that. Section 16 of RPA. What it says? Disqualification for registration in an electoral roll. So what are the ways in which your name will not be added in the electoral roll or removed? If you are not a citizen of India, let's say you became a citizen of some other country, or you had become a citizen of India through illegitimate means by forging the documents. अगर आपने गलत तरीके से document बना के citizenship ली होगी, in that case you will be disqualified. If you are of unsound mind and declared by a competent court. Okay, if you are mentally not fit, but that has to be officially declared by the court. Okay, फिर और भी है, we are not going in that detail, है ना, for the time being qualified from voting under the provision of any law relating to corrupt practices, etc. ठीक है, let's say अगर आप arrest हो गए, etc. We are not going in that detail, but एक rough idea लग गया, ठीक है. Now, in accordance with Section 23 of Representation of People's Act 1950, क्या लिखना है फिर? Further, they are writing Section 23 of Representation of People's Act. There will be a ERO, Electoral Registration Officer. ठीक है. जनरली वो आई थिंक एसडीएम के आसपास के ऑफिसर होते हैं रैंक के, जनरली. ठीक है, जनरली ऐसा होता है. ये थोड़ा सा आपको समझ लेना जरूरी है. देखो, फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड दिस. देखो, एट district level we have district election officer, which is generally equivalent to district magistrate, DM rank, or district collector rank.
इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है एज फार एज माई नॉलेज कंसर्न, आई थिंक एडीएम या एसडीएम रैंक वगैरह के होते हैं, एसडीएम। और इनके नीचे फिर असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। बूथ लेवल ऑफिसर इज गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं हर बूथ पे, ठीक है। एंड स्टेट लेवल पर होते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, दिस इज द स्टेट लेवल, ओके। एंड ऑल इंडिया लेवल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज देयर, इंडिया लेवल, राइट। So all are actually bureaucrats. So basically, like for example, in case of Bihar, Mr. Vinod Singh Gunjal, he's an IAS officer. He is the chief electoral officer of Bihar. Okay. Why I'm telling you, because of course you will understand the idea behind this. Okay. So I hope it clear हो गया. Chief electoral officer at state level, district level पर, who's a DM is actually a district education election officer. Then electoral registration officer is DM, generally SDM के आसपास होते हैं. Then junior to that is assistant electoral registration officer and booth level officer. ठीक है. Now let's talk about it. तो बता क्या रहे हैं? तो वही बता रहे हैं कि inclusion of names is generally done by electoral registration officer, है ना? That is the application registered in the electoral roll of any constituency, है ना? If there is they can strike off the applicant's name if it is not done in a proper manner. So whether the addition of electoral roll whether your name should be added or not is finally decided at electoral registration officer level. Okay, that is what you should be knowing about. We are calling it as ERO. और उसके junior होता है AERO, right? Now under section 24, an appeal of ERO can be filed to district magistrate and chief electoral officer. ठीक है, अब ये समझो, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज ERO, electoral registration officer. जनरली यहाँ पर आपका नाम ऐड होता है, they actually decide. So generally they are SDM or ADM level. Now let's say your name is not added. Where will you go there? उसके बाद कहाँ जाना होगा आपको? So you have to file an appeal in the to district election officer, which is generally a DM rank, district magistrate. Now still if your appeal is rejected, still if your electoral name has not been added in electoral roll, then you go to the chief electoral officer, who is at the state level, state head. Even if, है ना, तो that is the idea. तो यहाँ से आगे, यहाँ से आगे, यहाँ तक है बस, ठीक है? That is how the appeal is. Now I am telling you because here you will understand it. This is very important. So till now everything is clear. Is it clear? Yes or no? No one is responding. What happened? Is it clear? Yes or no? Clear? Okay, fine. ठीक है. So ये बता रहे हैं, these officers, chief electoral officer, district electoral officer, EROs, BLOs have been directed to take genuine electors, particularly old and sick, people with disability, poor and vulnerables are not harassed. ठीक है. So it's okay, when the revision is being done, of course people have to go. Like ideally BLOs are supposed to go at every houses, but the thing is they are being asked to come at a particular place. वो BLOs बुला ले रहे लोगों को कि आप अपना डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए, etc. ठीक है. खैर, these are the things. Electors मतलब voters होता है. It may underscore that both electors and political parties are the most important stakeholder. Yes, political parties should also help the voters, है ना, to create awareness, right? That is also their job. ठीक है. These are the things being talked about. वही बताया जा रहा है कि all eligible citizens should be added in electoral roll and non-eligible voters should be excluded. If a person has died or shifted, then of course, accordingly, the electoral roll has to be revised. For example, if a person was living in a Purnia district in Bihar, later on shifted to Patna, so his electoral will be deleted and here it will be added. Okay. So these are the things. That is what house to house visit ideally should be done. Okay. फिर और भी प्रोविजन है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते थे. You can apply online and register, give your all the information regarding that. ठीक है. I'll show you the form also. कि when SIR was done, what was the form? ठीक है. Claims and objections के लिए इसमें इतना जाना आप. Now here it is actually 24 June 2025. देखो ये dates हैं. Electoral Officer Bihar. I am directed to convey that the Commission has directed a SIR in exercise of its power under Article 324. We have discussed so many times. Election Commission of India has power, constitutional power under Article 324, right? To conduct elections. Now, Section 21 of RPA, this also we have done, right? Section 21 of RPA is actually preparation and revision of electoral roll. Whose responsibility? Election Commission of India.
ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट, है ना. सो इसको पढ़ लीजिएगा. मैं डायरेक्ट लिखा ना है, not make a special revision of the electoral roll for any constitution or part of in such manner as he thinks fit, right. तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन करा सकती है, यानी दोबारा will verify it again and add new ones and remove the old ones, right. ठीक है, ये सेक्शन 21 आरपीए. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. ओके, है ना. ईआरओ वही है जो ईआरओ ऑफिसर्स, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, है ना, आर रिस्पांसिबल फॉर एडिंग द एलिजिबल सिटीजंस, है ना. These are the things, of course, with the help of BLO. BLO is at both level, which is generally a government teacher, and EROs are actually SDM, ADM rank officers are there. ठीक है. Further, in case of application registration as a new elector for shifting from outside the state is also directed. Yes, if you are moving from one state to other state, these are the provisions that are mentioned. ठीक है. Now we have discussed the last SIR was done in Bihar was in 2003. This you should know. Another thing, now this time when the election will be happening in Bihar in November, the polling station will have maximum 1200 electors. Electors means the voters. So that this has been restricted so that there should be less shorter queues. ऐसे नहीं, कितनी लंबी लंबी लाइन लगी, लोग परेशान हैं, गर्मी में खड़े हैं, ठंड में खड़े हैं और वोट नहीं दे पा रहे हैं कि वापस चले जाने की इतनी भीड़ लगी हुई है. तो हर बूथ में ऐसा होगा कि बस 1200 लोग का ही वोटिंग का यहाँ पर रहेगा, फिर दूसरे बूथ में होगा. सो मेनी बूथ्स विल बी मेड सो दैट, और पोलिंग स्टेशन, बूथ मतलब वही पोलिंग स्टेशन, है ना. सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम कि बहुत भीड़ लगी हुई और समथिंग लाइक दैट, और देयर आर लॉन्ग क्यूज और समथिंग लाइक दैट. ओके, है ना. तो ये सब में इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है आपको. These are not very important. ठीक है, just I have attached for you. If anyone is interested, he or she can stop and read. Okay, वही आर्टिकल 324. Yes, this is आर्टिकल 324. तो अब इसमें ध्यान क्या देना है? The Election Commission of India has power of superintendence, direction, control for the preparation of electoral rolls. लिखा है ये ना, SIR is being done from here, and conduct of elections of Parliament, State Legislature, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. मतलब एमपीज का इलेक्शन करा सकते हैं, स्टेट लेवल पर एमएलएज या एमएलसी का इलेक्शन करा सकते हैं, और क्या है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा सकते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा सकते हैं. सो दे हैव पावर्स अंडर दीस फोर. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज पावर टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर एमपीज, दैट इज बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, एमएलए एमएलसी एट स्टेट लेवल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. Now the question is, sir, what about the third tier election? इसका इसमें नहीं mentioned है. Who conducts the third tier election? Third tier election, like for example, let's say मुखिया का election होता है, वार्ड काउंसलर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर, वो will conduct that. तो नहीं mentioned है 324 में. Anyone? We had taught earlier, मैंने earlier discuss कराया था ये. State Election Commission, very good. Chandra Lekha and Phoenix, you both are right. There's a separate constitutional body, State Election Commission, that is being set up for that. So you have to be very careful. Yes. Good. Siddhi, you all are right. ठीक है. So ये 324 को यूज किया गया तो बनाने के लिए. अब देखो, another question is, if I ask whether SIR was done earlier in other parts of India. Yes. देखो 1952 से 56, 57, 61 दे आर सेइंग कि ये पास्ट में हुआ है फॉर ऑल और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. लिखा ना है, लास्ट इन बिहार वाज डन इन 2003, बट इन अदर स्टेट्स लाइक दीज आर द इंसिडेंट्स वेयर एसआईआर वेर अर्लियर टेकन अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो मैं उनकी वेबसाइट से दिखा रहा हूं. ठीक है. ओके, जस्ट हैव एन आइडिया. एक दो बार पढ़ लीजिएगा, बिकॉज मे बी दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. यहां से पूछ ले कि व्हेन वी हैड सीन प्रीवियस एसआईआरस बीइंग डन. So here it is. 52 में भी हुआ था, 57, 61, 65, 66, 83. In क्या लिखा, all or some parts of the country. That is the very important thing. है ना. So ये हो गया है ना, ये सब लोगों ने डन कर लिया, इसमें कुछ नहीं जानना है. Since the election is expected later part. So because we are going to be election in November. That's the thing. है ना. And we have seen earlier. Yes, Mahati, it can come in other state also. Yes.
they can do a special intensive revision in other states also. This time actually in November there is an election, that's why they have decided to do it here. Maybe in future if in any other place election would be there in some other states, they can do, of course they have power. ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टोल्ड यू इज अपील. आई टोल्ड यू, देखो यहाँ पे अपील के बारे में लिखा है. फॉर एग्जांपल इफ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज सपोज टू ऐड यू एन इलेक्टोरल रोल एंड बिकॉज ऑफ विच योर नेम इज नॉट एडेड, यू विल फाइल एन अपील इन द, है ना, डीएम ऑर्डर लिखा है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, हियर इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. Now, still, if your name is not added, then you can file an appeal in the CEO, Chief Electoral Officer of the state. ठीक है, अपील ऐसे फाइल होता है. ठीक है, यू गॉट इट. अगर यहां नहीं ऐड हुआ तो फिर आप एसडीएम के पास जाओ, डीएम के पास जाओ, नहीं तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जाओ, है ना. दीज आर द टाइम लिमिट्स मेंशन. नाउ व्हाट वाज द इशू विद एसआईआर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, विल डिस्कस इट. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. हाँ, ये ध्यान रखिएगा. Now this is the form that you are supposed to submit. ये फॉर्म सी अक्सर आ रहा था, एनेक्सर सी का ये भरना है आपको. So इसमें आपको फोटो लगानी थी, आपको फोटो लगाना, आपका डेट ऑफ बर्थ, यू हैव टू गिव योर डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, एपिक नंबर. एपिक मतलब वही वोटर आईडी में नंबर होता है ना, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. फिर मदर्स नेम, एपिक नंबर, स्पाउस नेम. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन नेम, राइट. आई एम 18 अबव, आई वाज बोर्न इन इंडिया 1 जुलाई 1987. ये और ये तीन डिफरेंट मार्क करने को क्यों कहा गया? कैन एनीवन टेल मी व्हाई? आप जिस तरह बॉन्ड हो उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट लगाना है. व्हाई दिस वाज द केस? कैन एनीवन टेल मी? बिकॉज ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 मेंशंस दिस. देखो वोटिंग इज लिंक्ड विद सिटीजनशिप. वोटिंग का अधिकार सिर्फ सिटीजनशिप को होता है. सो बोथ आर एक्चुअली लिंक्ड टू ईच अदर. ठीक है, एज इंडिकेशन तो ठीक है, एज इंडिकेशन से ज्यादा 2004 के बाद अगर पैदा हुए तो भी तो आप 18 प्लस हो ही जाओगे. तो ये तीन अलग क्यों बताया गया? देखो मैं दिखाता हूं, आई शो यू. सो बेसिकली 2004 बिफोर वेयर नहीं, कोई जरूरी नहीं. फोइनिक्स देयर आर केसेस वेयर बिफोर बॉर्न 2004 वेयर नॉट एडेड आल्सो. ठीक है, इसका रिलेशन सिटीजनशिप एक्ट से. देयर आर 5 ways you can get citizenship: by birth, by descent, by registration, by naturalization, by incorporation of territories. These are the 5 ways you become the citizen of India. ठीक है, जनरली जो होते हैं वो यहां से होते हैं, most of them. For example, if you are born before this, you only need one document that you are born in India. बस इतना चाहिए. No matter whether your parents were born anywhere else. ठीक है, अगर आप इस जमीन पे पैदा हो, इसको कहते हैं जस्ट सोली प्रिंसिपल इन लीगल टर्म्स, व्हिच वाज देयर इन अमेरिका आल्सो. नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू चेंज. जिस जमीन पर पैदा हुए हो, चाहे आपके माँ बाप की सिटीजनशिप कुछ और भी क्यों ना हो, आप उस जमीन के सिटीजन बन जाओगे. करेंटली इज द केस इन अमेरिका देयर. ठीक है, अगर 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हो, इफ यू आर बॉर्न, देन यू हैव टू बी बॉर्न इन इंडिया, क्योंकि बाय बर्थ है, प्लस वन ऑफ द टू पेरेंट्स शुड बी द सिटीजन. ठीक है, एंड 3 दिसंबर 2004 के बाद इफ यू आर बॉर्न, then one parent should be an Indian citizen and the other one should not be an illegal immigrant. दोनों कंडीशन है. And these exact dates are actually mentioned here when you are filling the SIR form. And almost 2/12 लिखा है ना, 2 दिसंबर, यानी 3 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, so this is actually flowing from the Citizenship Act 1955. And accordingly, of course, you have to give the documents, etc. and citizenship. ठीक है, तो इसके बाद आपको ये भरना था कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप क्या है. बर्थ रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन लिखा है ना. बाय बर्थ है, बाय नेचुरलाइजेशन आप कैसे सिटीजन हो, हाउ यू बिकम सिटीजन. सो देयर आर 5 ways, राइट. फर्स्ट इज दिस बाय बर्थ, the second is by descent, by registration, by naturalization, by incorporation of territory. I'm not explaining it here currently because otherwise the class will become very long, but just remember there are 5 ways to get citizenship in India अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955. ठीक है, और थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जो वो आया था ना CAA, सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आई एम श्योर 5-6 years back. So it has actually relation with this. इससे इसका लेना देना. So there were some changes were done here by naturalization में. ठीक है, खैर, so we are talking about this. तो आपको ये भरना है फॉर्म, you have to fill the form and यही 11 documents. हर जगह हियरिंग में आ रहा था, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड.
कि after filling the form you have to give one of the 11 documents, right? है ना, 11 में इसको एक डॉक्यूमेंट जमा करना था ना, कि कोई भी एक हो तो यू हैव टू सबमिट इट. इसमें यू हैव टू बी केयरफुल, आधार कार्ड इज नॉट देयर. ठीक है. सो पीपल हैड सेड कि नो, बिकॉज हो सकता है जैसे कोई एजुकेटेड इसके पास मैट्रिकुलेशन का नहीं हो, पासपोर्ट नहीं हो, मे बी. सो देयर आर वेरी मेनी वेरियस केसेस वेयर पीपल डिड नॉट हैव एक्चुअली द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग इट. मतलब कोई एक भी नहीं था. ओके, सो दैट वाज वन थिंग. खैर, now what happened was the matter was filed in the petition in the Supreme Court in the last 2 months. The matter was being heard. Aadhaar should be added, not added, Aadhaar added, not added. Finally the Supreme Court passed an order that yes, now you should submit the Aadhaar. Matlab 11 documents mein now even Aadhaar can be accepted as the documents for the SIR in Bihar. Okay, that is what you should be knowing about. ठीक है. ओके, नाउ अच्छा एक दो चीज मैं बताऊं तो क्या क्या इश्यूज थे. सो वन इश्यूज वाज दिस, जो मैंने आपको अपील की बात बोली थी. देखो प्रॉब्लम विद अपील इज टाइम इज वेरी लेस. देखो एक्चुअली क्या है, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर द एंटायर प्रोसेस वाज डन इन जुलाई. फर्स्ट फेज रिजल्ट वाज ब्रॉट इन अगस्त. फिर अभी अगस्त में भी चल रहा है रिवीजन का. ठीक है. नाउ नवंबर में देयर इज एन इलेक्शन. इन द नेक्स्ट 1 or 2 months का ही टाइम मिलेगा. तो जी अपील की बात हो रही है कि इफ यूर लेट्स से योर नेम इज नॉट देयर इन इलेक्टोरल रोल and you got to know in September or October. Now you will get very less time to file an appeal in DM and CEO, है ना, to district magistrate or chief electoral officer. तो थोड़ा सा ये है, things were done slightly fast. थोड़ा सा I think it would have been better if they would have started slightly earlier. ठीक है. तो एक तो मेन इशू ये है कि जल्दी में थोड़ा सा हो गया. Now we are talking about आधार. अब सारी बात यहां पर थी कि आधार नहीं अलाउ किया जाए, but now the Supreme Court has said, है ना, लिखा ना, voters excluded from draft rolls can submit application because phase 1 is done in July. तो phase 1 का जुलाई में कंप्लीट हो गया और उसका मतलब डॉक्यूमेंट्स आ भी गया इलेक्टोरल रोल, and many are not added. So now the Supreme Court is saying कि अगर because they did not have any of the 11 documents, now Supreme Court is saying allow Aadhaar to be used. ठीक है. तो फेज 1 में जो जुलाई में सारा इलेक्टोरल रोल चेक किया गया तो उसमें 11 कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास शायद 11 डॉक्यूमेंट नहीं हो, कोई ऐसा समथिंग. तो फिर now the Supreme Court is allowing Aadhaar. But the question is Aadhaar a proof of citizenship? Yes or no? Because again, voting is always linked with citizenship. Only a citizen can vote. ये ध्यान रखना. No, it is not a proof of citizenship. आधार जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है सिंस बिगनिंग, है ना, does not confer any right of citizenship or domicile. ठीक है. Because even a foreigner can get the आधार at sector now. ठीक है. तो ये रेसिडेंट, कोई भी रेसिडेंट है, मतलब इट्स एक्चुअली सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है ये. ओके, सो दैट इज द थिंग अबाउट इट. ओके, दैट्स व्हाट यू शुड नो. और यहाँ पे भी इनका प्रेस रिलीज आया था, आधार इज नॉट अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, यूआईडीआई सेज. ठीक है. दिस इज द ऑफिशियल स्टैंड. So you will answer that. No, but there was actually a judgment of Bombay High Court and slightly surprising for me because voter ID card should be a proof of citizenship. So इसमें भी I'm not 100% sure because voter ID card means if you have got a voter ID card, of course I'm talking about in a legitimate way, then of course it means now you can go and register yourself in electoral roll and you can vote. So I'm not sure about voter ID card, but ideally voter ID card should be the proof of citizenship because it is linked with citizenship. Voting is always linked with citizenship. Aadhaar ka to yes, everyone knows it's not a proof of citizenship. Of course, passport is a proof of citizenship, no doubt, Aryan. ठीक है. तो खैर इसको पढ़ लीजिएगा. देखो होता क्या है, मेन प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप कहां से, यहां से फ्लो होता है. मैं बता देता हूं. इट फ्लोज फ्रॉम हियर. यही है तीनों में से. So the most important thing as the proof of citizenship would be, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है मालूम है? बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स. हमेशा याद रखिएगा, मे बी यू हैव टू इन योर स्टेट यू माइट हैव टू डू SIR, मे बी इन फ्यूचर. So the most important thing, the document that you should have with you is birth certificate. Ensure that you should have your birth certificate, which is of course issued by the government and the corporation.
प्लस योर पेरेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है. प्लस ऑफ कोर्स पासपोर्ट इज ऑफ कोर्स अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. ओके खैर, तो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बट ये है मेन जो सिटीजनशिप का प्रूफ है वो यहां से स्टार्ट होता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड सजेस्ट इज टू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है. तो अगर आपका नहीं है तो आप बनवा के रखिएगा, कभी हो सकता है फ्यूचर में लाइफ में जरूरत पड़े तो आप आसान हो, फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं हो ना. दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस. और आइडियली मतलब एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न वोटर आईडी शुड बी बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज लिंक्ड विद सिटीजनशिप. लेकिन खैर द बॉम्बे हाई कोर्ट सेड कि इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, बट लेट अस सी. पैन कार्ड वगैरह भी शायद उतना नहीं होता, आधार तो बिल्कुल भी नहीं होता है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, है ना. दैट इज व्हाट यू शुड नो. नाउ अब इश्यूज विद सिटीजनशिप, एक तो मैंने ये बताया एसआईआर का, वही कि अपील का टाइम, है ना, कि इफ you have not got through ARO, go to the DM, then go to the chief electoral officer, ठीक है. So the first problematic thing was, मतलब problematic ये जो भी कहो कि जून जुलाई में स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, स्पेशली 24-25 जून के बाद, है ना. Now the thing is, I'm sure you must be aware, a lot of people from the state of Bihar, they go to Punjab and Haryana in Kharif season, right? For cropping season, right? तो क्रॉपिंग सीजन ये जून से स्टार्ट हो जाता है, जून जुलाई से, एंड इट गोस टिल नवंबर दिसंबर, ऐसे ही होता है रफली. सो मई जून में जनरली a lot of laborers, or I would say farm laborers from Bihar, they go to Punjab and Haryana for plantation. And when they got to know in July that of course I have to submit those documents, and of course ideally you can submit it through online mode, but many did not have, or they have to come back because they did not have all the documents. So there were some issues regarding it. So ideally it was better if they would have started much earlier. This is my suggestion. At least January, February mein Election Commission of India should have started, so that there should not be any hurry. अभी जो जून जुलाई में स्टार्ट हुआ तो थोड़ा जल्दी हो गया, बिकॉज नवंबर में देयर इज एन इलेक्शन एंड इट वाज डन इन अ वेरी फास्ट मैनर, तो थोड़ा सा उसमें इशू हो गया. सेकंड थिंग इज, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, देयर इज अ फ्लड लाइक सिचुएशन इन नॉर्थ बिहार. So I was seeing some of the reports where journalists have gone and they were saying ki sir, we are not doing SIR, or we are not submitting the documents because we are currently, I mean there were floods, they were actually traveling on boats, so we are trying to save ourselves etc. तो एक ये भी इशू है थोड़ा सा. फिर इसमें ये बहुत सारी चीजें, फर्स्ट जब इलेक्टोरल रोल हुआ, जो जुलाई का पूरा phase 1 was done, so 65 lakh people were removed. They did not have a name. अब क्या 65 लाख में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी डेथ हो गई होगी, मे बी, एंड सम वुड हैव बिकम सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री, शायद ऐसे भी कुछ लोग होंगे. सम माइट हैव बीन इलीगल इमिग्रेंट, बट क्या ऑल 65 वेयर द, मेनी ऑफ देम माइट बी द एलिजिबल वन, बट दे डिड नॉट हैव द डॉक्यूमेंट्स, और दे कुड नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट विद इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. बहुत सारे रीजन हो सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी, ओके. And and there were some incidents where actually the dead people's name were registered in electoral roll. ये सब मीडिया ने कई बार मैंने देखा कुछ चैनल्स में कि जिनकी डेथ हो गई उनका नाम है अभी भी, कई फोटो कहीं पे गड़बड़ हो गई, कुछ ये सब इश्यूज हुए हैं कहीं पे. So these were the things, and some people had applied but still their name were not added. तो ये सब है तो प्रॉब्लमेटिक चीज, because of course you are adding the and removing the name and you are handling the names of so many crores of peoples, है ना. बिहार में आबादी कितनी, 10 आई थिंक समवेयर अराउंड अब तो 12 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन होगी, ओके. एंड 18 प्लस इसमें कितने होंगे, एटलीस्ट 5-6 करोड़ पीपल तो होंगे, आई गेस. आई हैव नॉट चेक्ड इट, बट हाँ. एंड यू आर डीलिंग विद करोड्स ऑफ पीपल, एंड नाउ इन such in such a I would say short span of time, it is actually very difficult to ensure that proper addition and removal of people should be done. तो थोड़ा सा जल्दी में ये काम हो गया शायद, इसलिए थोड़ा सा ये सब इश्यूज आ रहे हैं, मे बी. दैट इज व्हाट माय गेस इज. इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली, तो ऑपोजिशन प्रोटेस्टेड दैट दिस इज अ वोट थेफ्ट, इट इज ब्लाइंड एटसेट्रा. दैट इज व्हाट द ऑपोजिशन हैज सेड. तो बेसिकली बॉटम लाइन ये कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आप आधार यूज कर लो, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दिस इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है. बट नाउ आफ्टर सो मच, like for the past 2 months there were hearings were happening etc, now the Supreme Court has allowed documents, any 11 documents और आधार with their claims objections, ठीक है. तो अब आधार भी जमा कर सकते हैं. that is what the Supreme Court said. अच्छा, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, Supreme Court said that political parties should assess voters. So do you think political parties का ये काम है, yes or no?
Yes. अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे यू विल गेट टू नो दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट ओनली सपोज टू फाइट इलेक्शन, दे आर सपोज टू फॉर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, पॉलिटिकल, ठीक है। यस, ये नो नहीं होगा, यस होगा आंसर। पॉलिटिकल पार्टीज का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना, दे आर नॉट सपोज टू ओनली फाइट इलेक्शन एंड विन एंड हैव पावर। It is their responsibility to create awareness among the people. Yes, Phoenix, you're right. Grassroots level workers help. Ideally, the political parties are supposed to assess the people in the entire electoral process. ठीक है, तो but that is what the idea is, है ना। अच्छा चलो, election commission of India is actually, I'm sure you must be aware, it's a how many member body? 3 member. But आपको पता है it was not always a 3 member body. Earlier it was something else. कोई जानता है? It was actually, there was time when it was a 1 member body, ठीक है। तो देखो ऐसा 1950 से 1989 1 member body थी, फिर बाद में कुछ दिन के लिए 3 member body बनी, then again 1 member body, then again 3 member body comprise, now this is the case today, है ना। चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 इलेक्शन कमीशन, ये आज का दिन ऐसा है। Yes, हाँ, earlier 1 member body, right? That is what you should know. So currently this is the scenario, and I'm sure Mr. Gyanesh Kumar is the chief election commissioner, है ना, and there are 2 election commissioners also. तो इनका नाम पूछते हैं, मैंने देखा AILET में पूछते हैं अक्सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम, ठीक है। और ईवीएम वीवीपैट ये तो खैर अलग टॉपिक है, we'll discuss it some other day. So I hope you have got the concept of SIR, है ना। So this is all about today's class. Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.